So, hello students, welcome to Jadesar Plus 2 Science Residential College. I am Dr. Arvind, present here to discuss on a very interesting topic in Java programming language, that is looping. And in the last class, we had discussed the branching statements, different branching statements in Java programming language. And today in this video lecture, we will be discussing different looping statements in Java programming language. So, looping in programming language is nothing but a feature which facilitates the execution of a set of instructions or functions repeatedly while some condition evaluates to true. And in Java, it provides three types of looping statements, that is while loop, do while loop, and for loop. So, in Java it supports three types of looping statements. So, we will be discussing one by one. First come to while loop. So, what is the syntax behind the while loop? First come to its syntax. Syntax is what? So, first initialization of variable. Initialization of variable, right? So, जो variable टाको मु condition रे put करबी, that variable must be initialized before using while that variable name, right? So, while variable some condition, or you can write while condition, then these are the statements, that is the body of the loop. Then here reinitialization of variable. Okay, this variable must be reinitialized here. Okay, so this is the general syntax. So, first the variable must be initialized and then use it in the condition, and then that variable must be reinitialized inside the loop, then close here. So, here you can write other statements also, then close it. So, this is the general syntax of while loop. Okay, and this loop will be continued, okay, until the condition returns a false value. So, जते पर्यंत ये false value return न करछि सेते पर्यंत कौन तुम स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन हम until the condition returns a false value. Okay, so let us discuss with a small example. That is what, suppose printing of the numbers 1 to 5, right? Printing of the numbers 1 to 5. So, import java.io.star. Last class में discussion करते import java.io.star. Then class suppose call it print. Okay, and then public static void main string args. Okay, then int r equal to 1. So, हम लिखे initialization of variable. So, this is the initialization statements, right? Int r equal to 1, then while r less than equal to 5. More program कौन था? Printing the numbers from 1 to 5. So, r less than equal to 5, then system dot out dot println plus r. Okay, plus r कौन पाई दिया होची? Last class रे मु कहितली plus r means what? It will retrieve the value of r. Okay, and then here r plus plus or r plus 1. Okay, so close, while loop close, then public static close, then class print close, right? So, this is what, nothing but initialization of variable.
initialization, okay, and this is what condition, this is what condition, and then while loop starts here, and this is what reinitialization of variable, reinitialization of variables. देखो syntax अनुसार है गला first initialization, then condition, then reinitialization. So your output will be what? 1, 2, 3, 4, 5. Very simple. So see the implementation. So now let us come to our next statement, that is looping statement, that is what? Do while. Do while. Do while, okay. Do while, first come to the syntax. Syntax, in syntax same initialization, initialization of variable, okay, जेमती हमें while loop रे करथले एठी भी सेमती initialization of variable, then do curly braces start, then statements, then here reinitialization, reinitialization of variable, reinitialization of variable, okay. যেতବେଳେ ফার্স্ট টাইম আমি ভেরিয়েবল করছে তো এটি ইনিশিয়ালাইজ ফার্স্ট হুয়ে एक्चुअली, তারপরে अगेन एंड अगेन রিইনিশিয়ালাইজ हुए, राइट. Reinitialization of variable or increment or decrement, then do loop close here, then while condition. So this is the syntax of what? Do while loop. So first जेमती while do रे थिला, while loop रे थिला, एटी सेमती फास्ट इनिशियलाइज करिवो और डायरेक्टली एठी भी इनिशियलाइज कर परिवो, कहीं कहले हमर कंडीशन टा परे रहउची, बट नेक्स्ट टाइम एठी रीइनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स रहबो, राइट. सो दिस इज व्हाट द सिंटैक्स ऑफ do while loop. And the same program, let us discuss how to write the means the same program print 1 to 5 using do while loop, correct. So using do while loop, see import same statement, right, class, suppose here you write the print one, because last program we had used the print class name, huh? So print one means, as already we have discussed, what the class name must be same as your program name, then your program name is what? Print one dot
Java, right? Print 1, then public static void main string args. ओके मैं सर्टकट लिखि दूची कहीं मुझे प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन करके भी देखेबी तुमको. स्ट्रिंग args बस int r equal to 1 देखो ये इनिशियलाइजेशन वेरिएबल है. देन do, ओके, देन हियर system dot out dot println plus r, right, and here r plus plus गोटे इंक्रीमेंट कराला. ओके, do loop close here while r less than equal to 5. So public static void main close here and class close here. Very simple. ओके, खाली यही जगह मोर चेंज हो लूपिंग स्टेटमेंट. क्लियर? सो while loop और do while भितर डिफरेंस कौन? In while loop first it checks the condition and then enter into the body of the loop, but here first it enter into the body of the loop and then check the condition. So this is the basic difference between do while and while loop. Okay, here also the output will be what? 1 2 3 4 5. Very simple, right? So see the implementation. Okay, so now let us discuss our next looping statement, that is for loop. Okay, so how can you use for loop? For loop. First come to the syntax. Here in one statement you can write all these things, that is for initialization, that is initialization of variable, right, semicolon, condition, semicolon, reinitialization of variable, reinitialization of variable, and then this is what? Body of the loop. This is the body of the loop. But here some tricks are there. You have to remember some sequence. That is what? Here first it will what? Initialize the variable. Okay, and then it will check the condition. Second step. If the condition returns true value, then it will enter into the body of the loop. That is third phase, right? That is the third phase. First to second, second to third. Then after executing the body,
it will go for reinitializing the variable, right? So that is fourth one. After reinitializing, again it will go for checking the condition, right? And the loop continues until the condition returns a false value. Very simple. So here some tricks, that is in one statement, first it will execute this one, that is the initializing the variable, then checking the condition, then executing the body, then reinitializing the variable, then condition, executing body, reinitialization, condition, the loop continues until it will return a what? False value. Okay. So this is the syntax behind the for loop. Okay. So let us discuss how you can write the same program, that is printing the numbers from 1 to 5 using for loop, right? So see, so first what? Import same style class print 2. Okay, last program টা নেইଥିଲି print 1, এটি print 2 নেলি, হ্যাঁ? Then public static void main, right? String args. बस say int r equal to, suppose int r নেইছো এটি initialize करनी, int r নেলি for loop ভিতরে মু initialize করি, for r equal to 1, r less than equal to 5, r plus plus. Initializing condition, then reinitializing, and then inside the for loop you write system.out.println plus r. For loop close, public static close, class close. So very simple, right? So here the initialization statement, this is the condition, this is the what? Reinitializing statement, right? Suppose তুমি এটি r equal to 1 নেই যাও, right? r equal to 1 নেই যাও, তাহলে এটি এটা লেখা দরকার নাই, অটো কিন্তু এটি সেমিকোলন এমতি দাও, এমতি কলে भी ঠিক আছে, কিছু প্রবলেম নাই। So what will be your output? 1 2 3 4 5. Okay, very simple. So So we had implemented the same program using while loop, do while loop and for loop. So clear the concepts. So let us now try to solve another problem or another program, that is what? Sum of digits of a number. How to find out sum of digits of a number, and we have implemented the same three loop, while loop by using while loop, by using do while loop and by using for loop.
So before go for the implementing, first you know how can you find out the sum of digits of a number. What is the logic behind it, right? So say sum of digits of a number, sum of digits of a given number, sum of digits of a given number, right? Suppose my input number is, see first you try to understand the logic, then we will go for the implementing by using while loop, do while loop and for loop. Suppose my number is, suppose n equal to 1, 2, 3, 1, 2, 3, right? Okay. Then first your task is what, गोटे गोटे नंबर आम से एक्सट्राक्ट करवा आउ ताकू ऐड कर जीवा ताले मु कौन करी गोटे वेरिएबल आउ गोटे वेरिएबल नेबी सपोज आर इक्वल टू गोटे रिमाइंडर नेबी आउ सम इक्वल टू 0 नेबी बस मोर एतिकी वेरिएबल दरकार आउ एनटा मु इनपुट करबी कीबोर्ड रु राइट जेमती आम प्रीवियस क्लास रे पढ़ेथिली बाय द हेल्प ऑफ स्कैनर मेथड ओके स्कैनर क्लास यूज करके मु एनटा को रीड करबी तो बर्तमान मु एग्जांपल नेली एनटा सपोज 1 2 3 ताले मुझे एन टाकू मु डिवाइड करी मॉड्यूलर डिवीजन 10 देख दुटा डिवीजन अच्छे गोटे मॉड्यूलर डिवीजन गोटे इंटीजर डिवीजन जब मॉड्यूलर डिवीजन रे मु डिवाइड करुच्ची ताले ये कौन रिटर्न करिवो रिमाइंडर जब इंटीजर डिवीजन रे डिवाइड करुच्ची ताले कौन रिटर्न करिवो क्वोशिएंट राइट ताले मुझे एन मॉड्यूलर डिवीजन 10 करुच्ची देख 1 2 3 10 मॉड्यूलर डिवीजन करुच्ची 10 1 10 2 3 10 2 23 ताले केते रिटर्न करिवो 3 रिटर्न करिवो जदि n मॉड्यूलर डिवीजन करछि जदि n इंटीजर डिवीजन 10 करछि ताले 12 रिटर्न करिवो राइट ताले मु एटा कोन करबी r इक्वल टू n मॉड्यूलर डिवीजन 10 करबी ताले r रो वैल्यू बर्तन कोन केते रहला 3 तापर मु कोन करली देखो गोटे डिजिट बाहर पड़ला ताले जदि मॉड्यूलर डिवीजन करछि ताले गोटे डिजिट मु एक्सट्रैक्ट कर परिबी लास्ट डिजिटटा जदि इंटीजर डिवीजन करछि ताले नंबरटा रिड्यूस हो जिवो 12 पळे आसीबो ताले मु कौन करी सम इक्वल टू सम प्लस आर तो सम प्लस आर जो करुच्ची कौन हम सम इक्वल टू 0 प्लस आर आरटा के 3 ताले 0 प्लस 3 करके बता सम को केता अलट हम 3 ओके तो से रिपीटेड एडिशन करा जाए सम इक्वल टू सम प्लस आर मीन्स व्हाट इट विल व्हाट फाइंड आउट द एडिशन ऑफ सम प्लस आर एंड assign the result to the sum variable right एमती वे लिखा जाए सम इक्वल टू 3 नाउ n इक्वल टू बर्तमान n टाक मु रिड्यूस करबी गोटे सो n इंटीजर डिवीजन 10 ताले बर्तमान मोर n टा केते थिला 1 2 3 थिला बर्तमान n टा केते हिजबो 1 2 राइट तो एटा को मु कोन करबी गोटे लूप रे पके देबी ए देखो गोटे लूप रे पके हां सो देखो फर्स्ट हमर n टा केते थिला 1 2 3 तो बर्तमान केते हे गेला n टा 1 2 राइट सो सी फर्स्ट मोर n थिला 1 2 3 सो बर्तमान केते हेगला 1 2 क्लियर देन एठी मु पके देली सपोज व्हाइल लूप व्हाइल n ग्रेटर देन 0 सो जते पर्यंत n ग्रेटर देन 0 हेतिबो सेते पर्यंत लूप टा कंटिन्यू करिवो ओके सो बर्तमान अगेन पुनी n ग्रेटर देन 0 12 ग्रेटर देन 0 यस देन r इक्वल टू n मॉड्यूलर डिवीजन 10 पुनी 12 10 करबी ताले केते हबो 10 1 10 एटा केते हला 2 ताले r वैल्यू केते हला 2 सम इक्वल टू सम प्लस r 3 प्लस 2 केते हला 3 प्लस 2 केते 5 ताले सम रो वैल्यू बर्तन केते हिजबो 5 एंड n इक्वल टू n by 10 हेले n रो वैल्यू केते हिजबो 1 गोटे रिड्यूस हिजबो एटा ओके देन अगेन 1 ग्रेटर देन 0 यस पुनी इन करियो भीतर r इक्वल टू n मॉड्यूलर 10 सो 1 एटा 10 ताले 10 0 0 1 ताले r वैल्यू केते हला 1 देख परछो तो माने गोटे गोटे डिजिट से एक्सट्रैक्ट कर जाउछ देन सम इक्वल टू सम प्लस r ताले 5 प्लस 1 इक्वल टू केते हो गेला 6 n इक्वल टू n by 10 n by 10 कले केते हबो 0 राइट पुनी नेक्स्ट लूप को आसीबो 0 ग्रेटर देन 0 यस और नो नो
नो कला माने से कौन करियो लूप बाहर को पळे आसी काहे कहला एटा केते पर्यंत कंटिन्यू करियो जेते पर्यंत n रो वैल्यू ग्रेटर देन 0 हे सेते पर्यंत कंटिन्यू करियो जेते n रो वैल्यू इक्वल टू 0 हे जिवो लूप बाहर को पळे आसीबो जब लूप बाहर को पळे आसीबो सम भीतर केते थिबो 6 देखो 1 2 3 रो समेशन टा केते 3 + 2 + 1 दैट इज 6 क्लियर ये प्रोग्राम टा बहुत इंपोर्टेंट हाँ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर जे कौन से नंबर दबो से सही अनुसार लास्ट आड़ू गोटे गोटे नंबर एक्सट्राक्ट करके आसो फास्ट 3 एक्सट्राक्ट करिवो तापर 2 एक्सट्राक्ट करिवो तापर 1 एक्सट्राक्ट करिवो राइट देखि गोटे 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 सम बाहर करी जीवो राइट सो we have already implemented with an programming implementation so see the implementation first okay by using do while loop while loop and for loop so see the implementation first then we will discuss
So clear? So I hope you must be clear about for loop, while loop and do while loop. Okay. So if you are having any query or any doubts, then link is given. Put your query, suggestions and comments there. Thank you. Thank you to all.